Hello everyone, myself Babita Sharma, a member of SURAJ Group of Education, Mahendragarh. Today in this video, I would like to teach you models. In our previous videos, we have already taught you tenses, sentences and adjective also. So in this video, I would like to teach you models. What are the models? Here's the definition of model. A model is a verb used with another verb or main verb to express the mood or the attitude of the speaker. It means एक वर्ब के साथ दूसरे वर्ब को जब हम जोड़ते हैं वो मॉडल होता है। अगर हमने कैन के साथ स्विम को जोड़ा, हमने एक साथ दो वर्ब यूज किए। एक्चुअली मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, दे आर ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, shall, should, may, might, dare to, need to, all these are called models. But models are not independently right in a sentence. They need a main verb also. Suppose, look at the example. I can swim. Can is a model and swim is a main verb. Can is a model and swim is a main verb. Now, after this, we will discuss about the types of models. Can. Can is used in the sentences where there is a possibility of to do something. जहाँ पर कोई संभावना होती है, आप में किसी चीज में एबिलिटी होती है, आप पे किसी चीज को काम करने के लिए एबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। एबिलिटी, I can write with both my hands. With both my hands, मैं अपने दोनों हाथों से लिख सकता हूँ। In the same time पे मैं अपने दोनों हाथों से लिख सकता हूँ, ये उसमें एबिलिटी है। Then could, past tense of can is could. Could is used to for a polite request. Could हम polite request के लिए यूज करते हैं। Could I have your notebook please? Please, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकता हूँ? इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है और पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम वहां पर could का यूज करते हैं। Then may is used to ask permission. परमिशन के लिए यूज किया जाता है। A very common sentence is here. May I come in? May पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। जब कोई चीज होने की संभावना होती है, मे इट कुड बी, इट माइट बी रेन, बारिश हो सकती है, इसके लिए भी यूज किया जाता है। देन शुड, ऑब्लिगेशन, जहां समर्पण होता है, हम किसी चीज के लिए डेडिकेटेड होते हैं, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड ओबे योर टीचर्स, यू शुड respect your parents, and all these are some examples of should. You should obey your teachers. You should obey your teachers. So this is used for obligation, जहाँ पर हम डेडिकेटेड होते हैं किसी चीज को लेके या समर्पित होते हैं किसी चीज को लेके, वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। देन वन मोर, दैट वन इज माइट, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे।
the past tense form of may. So might possibility के लिए might भी यूज किया जाता है. Might, it might be rain today. It might be rain today. बारिश होने की संभावना है या बारिश हो सकती है. So these are some of the examples of modals. I think you all got it. Thank you. Have a nice day.